Hello everyone. We are going to talk about the coagulation of a blood. क्या बात करेंगे आज coagulation of the blood के बारे में बात करेंगे. तो ये coagulation of the blood is also called as a clotting of a blood. क्या बोलेंगे इसको? Clotting of blood. आपने तो सुना रहेगा कि this vitamin K is required for the clotting of blood. तो exactly होता क्या? अगर ये vein है आपकी या फिर arteries है, यहाँ पे अगर कोई rupture हो जाता है तो blood start oozing it out. So there should be a mechanism who prevent this blood loss, and that mechanism is called as a coagulation of a blood. Okay, so we going to talk about that in detail. So coagulation or a clotting is one of the characteristic feature of the blood. तो blood की characteristics होती है और वो blood के अंदर क्या होता है? Platelets. Platelets is also called as a thrombocytes. क्या बोलते हैं उसको? Thrombocytes बोलते हैं, जो कि help करेंगे coagulation of the blood में. It is defined as a conversion of a normal viscous blood. Blood क्या होता है? Coagulation of blood क्या है? Conversion. देखो ब्लड क्या करता है? फ्लूइड है, फ्लो करेगा. सो कन्वर्जन ऑफ अ नॉर्मल विस्कस. व्हाट डू मीन बाय विस्कस? ऑयल, राइट? अगर एक ग्लास में वाटर है, एक ग्लास में ऑयल है, तो अगर दोनों पोर कर दिए तो पहले कौन बहेगा? वाटर, राइट? बट ऑयल क्या होगा? विस्कस होगा, धीरे धीरे फ्लो होगा. दैट इज विस्कोसिटी. सो कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल विस्कस ब्लड इनटू अ जेली लाइक मास, इनटू व्हाट? इनटू अ जेली लाइक मास. इसको क्या बोलेंगे हम? कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग. ओके, विद इन टाइम पीरियड तो होना चाहिए ना. विद इन, अगर कोई कट हुआ है तो 10 मिनट के बाद होगा तो इट्स नॉट प्रॉपर, राइट? विद इन टाइम होना चाहिए, 3 to 30 मिनट्स के अंदर ये मैकेनिज्म होना चाहिए. ओके, वंस एक्सपोर्ड और आफ्टर एक्सपोजर टू एक्सपोजर to atmosphere or air, simply air. Okay, so how these pathways or this blood clotting actually work? So let's see, let's talk about it in detail. So there are mechanisms. Okay, there are two pathways, extrinsic and intrinsic. Extrinsic, name itself is tell about something. Extrinsic pathway. एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या रहेगा? बाहर की तरफ का पाथवे रहेगा. और एक है हमारा इंट्रिंसिक. ओके, व्हाट इज दैट? इंट्रिंसिक पाथवे. इंट्रिंसिक पाथवे. क्यों ऐसे दो दो पाथवे है? लेट्स डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल. सो फर्स्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट, इट इज द डैमेज टू टिश्यू आउटसाइड द वेसल. ये कब होगा स्टार्ट? डैमेज. ये एक्टिवेट कब होगा? डैमेज टिश्यू होगा आउटसाइड से. टिश्यू अगर आउटसाइड से डैमेज होगा तो सबसे पहले कौन होगा? एक्सट्रिंसिक पाथवे, बाहर की तरफ से. यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए वी हैव अ प्लाज्मा फैक्टर्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो कौन से प्लाज्मा फैक्टर है? दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल इन दिस लेक्चर ओनली. बट यहाँ पे अभी ध्यान रखो, फोर्थ फैक्टर विल बी एक्टिवेटेड, फिफ्थ फैक्टर, सेवन एंड द 10 फैक्टर विल बी एक्टिवेटेड. तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, डैमेज टिश्यू हो गया. मतलब ये आपका ब्लड वेसल है फॉर एग्जांपल, ये डैमेज हो गया. तो फर्स्ट विल बी स्टार्ट एक्सट्रिंसिक पाथवे. तो ये जो डैमेज टिश्यू आउटसाइड द वेसल है, तो प्लाज्मा फैक्टर क्या हो जाएंगे? ये वाले प्लाज्मा फैक्टर क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे. फोर्थ, फिफ्थ, सेवन एंड 10, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. दे विल स्टार्ट टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करेंगे. एंड दे वंस एक्टिवेट दिस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन with the help of calcium. Calcium is required, right? Along with some protein, calcium is required. Okay, so ये क्या करेगा? जो इनएक्टिव फैक्टर जो X है, फैक्टर X, फैक्टर जो X है, that is called Stewart factor. That's called as a Stewart factor. वो क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है. लेकिन अगर ये चीज होगा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एंड प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, इनएक्टिव को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा. ठीक है. नाउ ये हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे. दोनों पाथवे मर्ज हो जाएंगे एट द लेवल ऑफ दिस फैक्टर एक्स. बट लेट्स स्टार्ट अबाउट इंट्रिंसिक पाथवे. फिर डैमेज टू ब्लड वेसल. ये क्या था? डैमेज टू टिश्यू था. ये था डैमेज टू टिश्यू. अगर डैमेज टू ब्लड वेसल, डैमेज टू क्या होगा? ब्लड वेसल होगा. तो ये इंट्रिंसिक पाथवे और ज्यादा. ये क्या था? टिश्यू लेवल पे था, डैमेज टू टिश्यू लेवल पे था.
Okay, so what going to happen in this case? Damage to blood vessel, damage to blood vessel. और ये क्या एक्टिवेट करेगा अगर डैमेज हो रहा है तो? Platelets cofactor. It will be start. I'm going to write with a red pen. Platelet cofactor along with plasma factors. Along with plasma factor. See here also plasma factor. Here also plasma factor in case of intrinsic pathway. But यहाँ के plasma factor पता है कौन कौन से है? फोर्थ आपका तो है ही है, ठीक है। फोर्थ के बाद आपका है फिफ्थ, उसके बाद आपका नाइन्थ है, उसके बाद आपका 12 फैक्टर यहाँ पे एक्टिवेट होगा। और ये क्या जनरेट करेंगे? दे विल जनरेट और दे विल व्हाट वी कैन से एक्टिवेट दी प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये भी क्या करेंगे? प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करेंगे। एंड वंस इट एक्टिवेट अगेन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम along with protein, they will एक्टिवेट इनएक्टिवेट, और जो इनएक्टिवेट था स्टुअर्ट फैक्टर उसको क्या करेंगे? इनएक्टिव एक्टिवेट करेंगे। माय पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो यहाँ तक बातें समझी कि एक्सट्रिंसिक पाथवे है, इंट्रिंसिक पाथवे है, ये कैसे काम करते हैं। तो हमने बात की एक्सट्रिंसिक पाथवे जहाँ पे टिश्यू लेवल पे प्रॉब्लम हो रहा है, इंट्रिंसिक पाथवे जहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लड वेसल को प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट इफ दैट एक्स फैक्टर, that is Stewart factors, get activated? Definitely it's going to start this cascade mechanism. कौन सा cascade mechanism start करेगा? ये बन जाएगा आपका फिर अभी active X factor. Stewart factor will be now activated along with factor fifth. Okay, तो ये क्या करेंगे? along with vitamin K. Yes, vitamin K is very much important in case of this. तो एक्टिवेट करेंगे प्रोथ्रोम्बिन को। क्या करेंगे? थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेंगे। ओके, प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करेंगे। नीज नीज एज एक्टिविटी, राइट, एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करेंगे। once they start the prothrombinase activity, then inactive along with inactivate heparin, along with heparin is what? Blood coagulant, right? Yes. तो वो क्या करेगा? उसके बाद द प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बीकाइनेज से क्या बनेगा? प्रोथ्रोम्बिन बनेगा। That prothrombin will leads to formation of thrombin in presence of calcium. See, calcium is plays important role over here in a blood coagulation. Okay, once thrombin is get activated, this thrombin leads to activate the fibrinogen. Fibrinogen, we require fibers, right? Fibrinogen convert into the fibrin, and once they convert into the fibrin, what happens next? Once they convert into fibrin, your which factor? Now, factor 12. Factor 12. Factor 12 is named as fibrin stabilizing factor. Okay, factor 12 is known as factor. What's that? Fibrin stabilizing factor is getting activated when fibrinogen is converted to fibrin. And once that converted, your actual blood clot is going to form. And once the blood clot is formed, it's secreted into the serum, and then the blood vessel, यहाँ पे क्या होगा? प्लेटलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बीन बनेगा, थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन क्या करेंगे? उस कट को ब्लॉक करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉट विल बी फॉर्म। दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। यस, सो देखो ये कैस्केड मैकेनिज्म की काम करेगा। एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक एक्टिवेट क्या करेंगे? फैक्टर एक्स को। फैक्टर एक्स अलोंग विथ फैक्टर फिफ्थ अलोंग विथ विटामिन के प्रोथ्रोम्बिनेस को करेगा एक्टिवेट। प्रोथ्रोम्बिनेस थ्रोम्बिन सूट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन बनाएगा अलोंग विथ कैल्शियम, and then fibrinogen converted into fibrin, and this fibrin along with factor 12 forms your blood clot. This point is very much clear what we have talked about. Okay, चलो अभी important factor के बारे में बात करेंगे जो जो आपको important है। ओके, आपके सिलेबस वाइज। सो क्लॉटिंग फैक्टर, आई एम गोइंग टू राइट हियर अ क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, देन उसके सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल,
बट ये चीज होनी चाहिए. द फर्स्ट, okay, it's called as a factor. It's called as a factor 1, factor 2. So I'm going to write in Roman words. Okay, so you understand that. First, your is fibrinogen. First क्या आपका fibrinogen है. And fibrinogen is what? Glycoprotein synthesized in liver. Mostly क्या होता है? Synthesized in liver. Contains 3 pairs of non-identical polypeptide chain soluble in plasma. तो ये क्या करना चाहिए? यहाँ पे लिखना चाहिए. Important क्या है? Synthesized in liver. It is a glycoprotein. What? Glycoprotein है ये. Okay, and it's soluble in plasma. ये क्या है? Soluble in plasma है. This point is very much clear. Let's move to the next one. That is prothrombin. That is next is prothrombin. अब ये prothrombin क्या है? फैक्टर क्या रहेगा आपका? 2 रहेगा in Roman. Okay, so this prothrombin is factor 2, which is also glycoprotein synthesized in liver and vitamin K. Synthesized in liver by vitamin K. तो ये synthesize इन लीवर होगा. तो ये फैक्टर 2 है, उसको ही क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं. Okay, I have written here. That's okay, but you can understand that. Okay, synthesized by liver with help of vitamin K. Okay, then आपका है फैक्टर 3. फैक्टर 3 is thromboplastin. It's called as a thrombo. हमने देखा था ना मैकेनिज्म में अभी, thromboplastin, right? Thromboplastin or is also called as a tissue factor, is also called as, or is also called as the tissue factor. It's called as a tissue factor. It is a lipoprotein secreted in inactive form. It's what? Lipoprotein. ऊपर वाले क्या था? ग्लाइकोप्रोटीन था. ये क्या है आपका? लिपोप्रोटीन है, which is activated by pro-converting of a plasma tissue. Okay, extrinsic path में जो हो रहा था हमने देखा था, right? Let's move to the next one. That is your factor 4. देखो, extrinsic में और intrinsic में factor 4 हमने देखा था. Okay, plasma factor कर. So that is your calcium ion. That is more important. Required for formation of intrinsic as well as extrinsic thromboplastin. So this is important for thromboplastin activator in both way, extrinsic and in intrinsic, both way pathways is very important. Okay. Now the factor 5, which is along with X2, what factor is a factor for 5th beta? That is called proacylin or a libel factor. Proacylin or libel factor. Important है बहुत, right? That is also glycoprotein heat. See, वो heat labile है, heat labile. Okay, heat मतलब वो heat sustain कर सकता है. Synthesize in liver, absent in serum. Synthesize in liver पे है, but absent in serum में absent है ये. Okay, now factor 5th हो गया. Factor, let's talk about the 6th one. That is your acelyrin. Okay, this is hypothetical activation product of proacylin. देखो ये क्या था? प्रो था, ये क्या? एसिलिन. प्रो हट गया, तो कैन आई से दैट इट्स अ hypothetical activator, active form of factor 4th. Factor not 4th, I'm sorry, the factor 5th one. I'm talking about the factor 5th one. Okay, now this 6th one factor is actually the, what we can say, activator factor. You can see it by the name itself, right? Now let's go to the next factor. That is your 7th factor. That is serum prothrombin. Serum prothrombin. Prothrombin acylator. Okay, it's a, or also called as a stable factor or autoprothrombin. It's also called as a autoprothrombin. Okay, it's also called as autoprothrombin. अब ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, सिंथेसाइज इन लिवर ही होगा. रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. ये क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की तरह काम करेगा. ग्लाइकोप्रोटीन. Its deficiency causes hemophilia. This is very important. Its deficiency
causes hemophilia. So hemophilia A. Okay. So which causes hemophilia A? Your seventh factor, that is serum prothrombin acylator. It's going to cause these things. Okay. After that, your eighth factor. We're going to talk about the eighth factor. That is anti-hemophilic factor. Anti-hemophilic factor. Sorry, factor. Okay, anti-hemophilic factor. The name itself is suggests us a very thing. Okay, it is glycoprotein again synthesized in liver, required for prothrombin activator, and its deficiency causes hemophilia A. Again, it's going to cause the hemophilia A. Okay, so this point is very much clear to you. Okay, now see anti-hemophilic is going to talk about this, and that eighth factor that we're going to talk about is seven, the serum prothrombin acylator. Serum prothrombin acylator. It is also synthesized in liver by vitamin K associated with the prothrombin and accelerated tissue prothromboplastin formation from the damaged tissue. ये क्या होगा यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं. ओके, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. और जो ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट किसके लिए है? डेफिशिएंसी क्या होगा इसका? हीमोफिलिया ए डेफिशिएंसी, अगर ये प्रॉपर काम नहीं करेगा तो. ओके, दैट पॉइंट इज वेरी मच क्लियर. देन फैक्टर we have after 8 we have a ninth factor. The ninth factor is anti-prothrombin 2. Anti-prothrombin 2 क्या करेगा? ये ग्लाइकोप्रोटीन है, सिंथेसाइज लीवर है, डेफिशिएंसी कॉजेस हीमोफीलिया बी. हीमोफीलिया बी कॉज करेगा. तो यहाँ पे देखो, हीमोफीलिया ए इज कॉज्ड बाय एंटी हीमोफिलिक फैक्टर. Okay, anti-prothrombin 2 hemophilia B is going to cause. This point is very much clear to you. After this, we have a Stewart factor. Okay, Stewart factor is what? Intrinsic हो या extrinsic हो, with the calcium ये activate करता है, activate हो जाएगा Stewart factor. ठीक है, Stewart factor. This is also glycoprotein. Its deficiency causes a nose bleeding. Deficiency causes nose bleeding. Nose bleeding. Okay. उसको क्या बोलते हैं? एपिस्टैक्सिस. एपिस्टैक्सिस. नोज ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं? एपिस्टैक्सिस. This point is very much clearing. Okay, now last two factors that is very important. The 11th one. The 11th one is your plasma thromboplastin. Plasma thromboplastin antecedent. Antecedent. Okay, that is PTA. Okay, now it's also glycoprotein. It's required for stage 1 of the intrinsic pathway. हमने लिखा था ना, X1 is required, stage 1 of, okay, synthesized liver, and this is deficiency is causes hemophilia C. So this is very important point. C. Hemophilia C is going to cause hemophilia C. Hemophilia A anti. Okay, hemophilia B anti-prothrombinase 2, and hemophilia C is caused by your PTA. Okay, see whatever the important things I'm writing in front of you, so please make sure you understanding it properly. Okay, now the factor 12 we're going to talk about. Sorry, factor 12, right? Yeah, so that is Hagman factor or surface factor. It's called a surface factor, also called as a Hagman factor. Hagman factor. And this is responsible for what? Present in a both plasma and serum. It's present in serum plus plasma. दोनों में रहेगा ये. ठीक है. And this is required for formation of prothrombin activated complex. Deficiency result in delayed blood clotting. Deficiency delayed blood clotting. Blood clotting will be there. Okay, surface factor responsible for what? Blood clotting should be in proper way, smoothly. But if not there, then there will be a delay in blood clotting. Okay, and the last factor, that is the factor 13, is fibrin stabilizing factor.
Now tell me one thing, fibrin is responsible for actually blood clot, right? Along with the factor 12. So fibrin stabilizing factor. And this is actually responsible for what? Actual formation of the blood clot, right? It is insoluble. Fibrinogen जब भी फाइब्रिन में बनता है तो it's a insoluble one, क्योंकि insoluble चाहिए ना, हमें block करना है. Okay, as this deficiency will be cause hemorrhagic stage, hemorrhagic हिमोरो के हिमोरेजिक स्टेज. क्यों हिमोरेजिक स्टेज होगा, चलो देखते हैं. अगर ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे फाइब्रिन बन गया, अगर वो इनसॉल्युबल रहेगा तो ही बेटर ना, ये पैक करेगा, सील करेगा. अगर ये नहीं है यहाँ पे तो क्या होगा, ब्लड फिर से जा सकता है बाहर, राइट. तो हिमोरेजिक स्टेज हो सकती है. सो वी हैव टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल. ओके, so you can see in this we talk about this all in detail, right? So let's revise. Hemophilia A is caused by the 8 factor, hemophilia B caused by the 9 factor, hemophilia C caused by the 10 factor. Okay, this is important. And delayed in blood clotting caused by your 12 factor, that is surface factor. Okay, and the hemorrhagic stage caused by the last factor, that's fibrin stabilizing factor. So I hope you understood this very much in detail, that is blood clotting. Okay, thank you for paying attention.